हेलो फ्रेंड्स, केम छो बधा मजा में छो। तो आज आप बनावीशू सेव टमेटाનું શાક। गुजराती आप सेव टमेटाનું શાક बनावीशू। तो आप 2 चमच तेल नाखशू। तो आप कढ़ाई गरम करवा माटे राखी दीधी हती ने आप लीधा छे टमेटा। तो मैं आ आकारना काप्या छे आवी रीतना। तो मैं मोटा मोटा 4 टमेटा लीधा छे। तो आप तेल गरम करवा माटे राखी दीधो छे। तो आप 1 चमच राई नाखी दीधी छे। हवे 1 चमच आप नाखशू हींग। तो हींग ने राई सारी रीते पकी जाए पछी आप नाखशो एनामां मीठू लीमड़ू। तमे एने कढ़ी पत्तो कही सको छो ने मीठू लीमड़ू पण कही सको छो। तो राई ने सारी रीते फूटी जाए त्या पछी आप नाखशो लीमड़ू। तो हवे मीठू लीमड़ू पण कही सकीए ने एने कढ़ी पत्ता आपे कही सकीए। तो हवे राई फूटी गई छे तो आपे कढ़ी पत्ता उमेरी नाखशो। तो एनामां आपणे नाखशो लसूणनी कलियां पण उमेरी नाखशो आवी रीतना। तो आपणे लसूणनी कलियां जे आपे उमेरी छे एने आपे थोड़ी गरम करवानी है, जलावानी नहीं। तो आप एनामां टमेटा नाखी दीशुं आवी रीते। तो हवे टमेटाने मिक्स करी नाखीए तेल में आवी रीते। तो गुजराती सेव टमेटानुं शाक बहु ज सरस सारूं लागे जमवा माटे। तो हवे एने आपणे ढांकीने थोड़ी देर राखी दईशुं 3-4 मिनिट में। 4 मिनिट में ढांकी राखी ते तेल में सारी रीते पकी जाए। तो आपणे 4 मिनिट थई गई छे। हवे आपणे ढांकणाने खोली दईशुं आवी रीतना। तो कपड़ाथी झालीने आपणे खोलशुं के तमारे हाथ पर बाफा ना निकले ने तमारा हाथ जले नहीं। આવી રીતના આપણે મિક્સ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો। તો આપણો જે આપણે ટમેટા એનામાં નાખ્યા છે એ સારી રીતના પાકી ગયા છે તેલમાં, તમે જોઈ શકો છો। તો આવી રીતના આપણે ચમચાથી એને જોઈ નાખશું આવી રીતના। તો આવી રીતના આપણે જોઈ નાખશું। હવે એનામાં આપણે નાખશું હરી મિર્ચ, લીલી મિર્ચ છે આપણે જો તીખી વાળી એ 3 લીધી છે। જો જોઈ શકો છો તમે। જો તમને કટ કરવી હોય તો તમે કટ કરીને એને નાખી શકો છો। જો તમને એમ જ નાખવું હોય તો તમે આવી રીતના તમે એનાને ઉમેરી શકો છો કે જે તમને પસંદ ન હોય તો તમે આવી રીતના। તો આપણે ટમેટામાં 3 હરી મિર્ચ ઉમેરી છે આવી રીતે। હવે એને આપણે પકાવીશું હજી થોડીક વાર। જોઈએ સ્વાદ અનુસાર નમક, આદું તમને જો ઘણું જો જોઈતું હોય નમક તો તમે 1 ચમચી નાખી શકો છો। તો મિક્સ કરશું આવી રીતના। જે ટમેટાને કાપ્યા છે એને આપણે જોઈ નાખશું આવી રીતે। खूब सरस थी जाए। लीधी है चमच लाल पाउडर पीसेली, आधी चमच लीधी है आप हळदर, 1 चमच लीधी है आप धनिया पाउडर ने आधु चमच लीधु है आप जीरा। तो जब तमारे कने जो जीरा पाउडर हो तो तमे ए उमेरी सको छो ने जो तमारे कने आवुं हो तो तमे आखो जीरो हो तो तमे उमेरी सको छो। हवे आवी रीतना आपणे मिक्स करी नाखशुं। आपणे आ जे सब्जी में आपणे पछी आपणे नाखशुं एनामां सेव। हवे एने थोडुं आपणे पाणीमां थोडुं पकावीशुं। तो 3 चमच आपणे पाणी नाखशुं एनामां। जो तमने रसवाड़ी सब्जी જોઈએ, શાક જોઈએ તો તમે ઘણું પાણી નાખી શકો છો। જો તમને કોરી સબ્જી જોઈએ તો તમે આવી રીતના તમે બનાવી શકો છો। હવે આપણે એને ઢાંકી નાખશું 2 મિનિટમાં। 2 મિનિટ સુધી ઢાંકી નાખશું। તો આપણી 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે જોઈશું કેવી રીતના બની। તો આપણે તમે જોઈ શકો છો થોડું થોડું એનામાં રસ છે। તો એનામાં આપણે થોડા હળા ધનિયા ઉમેરી નાખશું। હવે એને થોડું ચલાવશું આવી રીતના। જો આપણે ટમેટા નાખ્યા છે એની પછી આવી રીતે करशुं तो बधुं मिक्स थई जशे ने बधुं सारुं लागशे तमने जमवा माटे। हवे एनामां आपणे लीधी छे सेव। तो तमे जोई सको छो आवी रीतना आपणे सेव लीधी छे। तो हवे ए सेव आपणे एनामां उमेरी नाखशुं आवी रीतना। एने आपणे मिक्स करी नाखशुं आवी रीतना। हवे आवी रीते मिक्स करीने तमे 3 मिनिट तक फरी ढांकी नाखशुं ढकणाथी। आवी रीते आपणे ढांकी नाखशुं के बधी सको छो कि 3 मिनिट 2 मिनिट 4 मिनिट में आपणो शाक तो तैयार थई गयुं छे। जोई सको छो आपणे जे पाणी एनामां उमेर्युं हतुं ये सूची लीधुं छे सारी रीते। आवी रीतना तमे एनामां खांड उमेरी सको के चाहे गोळ उमेरी सको। जो तमने मीठું न पसंद होय तो तमे एम ज खाई सको छो। तो आपणुं सेव टमेटानुं शाक थई गयुं छे तैयार। गुजराती सेव टमेटानुं शाक झटपटुं खाटुं मीठुं तो थई गयुं छे तैयार। तमे जोई सको छो। तो जो मारुं सेव टमेटानो विडियो शाकनो विडियो तमने सारो लाग्यो होय तो मारी विडियोने लाइक અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। धन्यवाद।